All right, Karan, we are live now. Perfect. So maybe we'll start in another minute. Let's check who all have joined. I'm trying to. Yeah, all right. So I think we'll start now. Hi, Okay. friends. Hello and welcome to another edition of Live in Conversation with मस्त कलंदर ट्रैवल्स। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर विजयता महेंद्रू और आप मुझे प्यार से डॉक्टर वी विजयता या विजी बुला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इंसान ट्रैवल सिर्फ ट्रैवल करने के लिए ही नहीं करता, बट कई बार इंसान अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए या फिर कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए एक डिफरेंट स्पेस में जाता है। और कई बार क्या होता है कि हम उस सफर में जब निकल पड़ते हैं तो बहुत कुछ रास्ते में सीखते और सिखाते चलते हैं। तो इसी नोट पर हम आज के गेस्ट को वेलकम करते हैं जो बहुत ही क्लोज है मेरे हार्ट के, क्योंकि ये मेरे वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम जेएनयू हैं, कारण मकरचयान। सो लेट मी टेल यू कि मैं कारण से मिली कैसे। हमारे हॉस्टल में जेएनयू में हॉस्टल नाइट करके एक सेलिब्रेशन होता था और उसके लिए बड़े दिनों पहले से प्रिपरेशंस होते थे। तो मैं भी एक दिन पोस्टर वगैरह कुछ बना रही थी और सामने एक ये लड़का सुंदर सा लड़का बैठकर कुछ क्राफ्ट वगैरह कर रहा था, मदद कर रहा था लोगों की। और आराम से अपने एक थोड़ा सा एक्सेंट के साथ हिंदी में बात कर रहा था और सब कुछ। तो काफी हम लोग एंजॉय करते थे ये सब मोमेंट्स। इसी में हमारी खूब बात बात होने लगी। कुछ दिनों तक हम हैंग आउट करते रहे, चाय वाय पीते रहे, अपनी बातें बातें करते रहे। फिर मुझे पता चला कि इस नाम मुझे पता था कारण, और मैंने सवाल नहीं उठाया कारण नाम पे, क्योंकि ऑब्वियसली कारण एक कॉमन इंडियन नाम है और मुझे लगा ये कश्मीरी है। लेकिन फिर एक दिन पता चला कि ये आर्मीनियन है। और इसके पहले तक आर्मीनिया जो कंट्री है वो मेरे नज़र में, मतलब मुझे सिर्फ उसका कैपिटल और उसका ग्लोब में लोकेशन पता था कि आर्मीनिया क्या है, कहाँ है, दैट्स ऑल। तो अचानक से एक आर्मेनियन लड़का मेरे लाइफ में आया और मेरा दोस्त बना। और वैसे तो जेएनयू में बहुत सारे फॉरेनर्स पढ़ते हैं, तो इट्स नॉट अ सरप्राइज कि एक फॉरेनर और है। लेकिन यहाँ कुछ अलग मामला था, क्योंकि कारण जो है वो एकदम अमेजिंग हिंदी बोल रहा है, हमारी तरह मुहावरे तक बोल रहा है। वो जिस तरह से हमारे वर्ड्स का इंटोनेशन होता है, उसने वो बिल्कुल उसी तरह से बात करा है, बिल्कुल सेम टू सेम। तब मैंने थोड़ा और कुरेदा तो पता चला कि ये जनाब बचपन से यहीं रहते हैं, कैलकटा में रहे हैं। और अब आगे की कहानी हम लोग कारण के ही मुंह से जानते हैं। सो कारण, वेलकम टू मस्त कलंदर ट्रैवल्स। थैंक यू फॉर कमिंग लाइव विथ अस। तो अपना एक शॉर्ट Good, इंट्रोडक्शन दे, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। good evening, Vijay. Thanks for having me. This is your third this type of show, huh? And उसमें फोर्थ। आपका fourth. फिर भी it's just the fourth. आगे जाके बहुत होने वाला है. So I'll be one day looking back and saying कि मैं पहले समय एक था. Initially जब नया start होया था, I was the one of the VVIPs on this show. Thanks for having me. काफी इंटरेस्टिंग यादें आ गई जब आप बता रहे हो जेएनयू के बारे में. आई रिमेंबर हाउ आई हैड जस्ट टेकन एडमिशन इन जेएनयू तब, और मैं चंद्राबागा में मेरा रूम था, पर मैं रहता ना वहाँ नहीं था, बाहर बसंतपुर में रहता था या सतलेज में दोस्त के पास रहता था, अरिहान जो अभी जेएनयू में प्रोफेसर है पर्यटन सेंटर में. तो एक दिन मेरे को सतलेज में मैं देखा डेकोरेशन से कुछ चल रहा है. तब मेरे को पता नहीं था हॉस्टल नाइट वगैरह होता है जेएनयू में. तो पूछा क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हॉस्टल नाइट है, कल्चरल नाइट है. मैंने पूछा तो सब हर हॉस्टल का होता है? बोला हाँ, हर हॉस्टल का है. तो मुझे लगा भाई मैं चंद्रभागा में कम से कम रजिस्टर तो रहता नहीं हूँ, तो वहाँ है कमरा, सामान वहाँ पड़ा है, मैं जाकर उधर हेल्प कर लूँ, मेरा वो फर्ज बनता है. तो मैं आया जब तब कोच था प्रेसिडेंट. मैंने कोच से पूछा कुछ काम है मेरे लिए ऐसे टाइप. बोला लगो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, शिकी एंड ऑल, यू गाइस वर सिटिंग इन द गेस्ट रूम. पता नहीं अभी कोई भी जाएगा चंद्रभागा घाट के ठीक बाजू में, वहां पे हमारा एक स्टार निशानी है, जो हम लोग स्टार्स काट रहे थे जमीन पे, अभी तक भी
वो है क्या इसका नाम, वो मार्क हम लोग ग्रेनाइट कटा हुआ है स्टार का। ग्रेनाइट काटा हुआ है, हम लोग को पता भी नहीं चला, हम लोग काट काट के कब उसको पूरा जमीन डिस्ट्रॉय किया पता भी नहीं। 2 काफी स्टार्स इंटरेस्टिंग। हैं एक्चुअली, एक भी नहीं, दो 2 स्टार है। था, दो है तो एक मार्क, कभी लाइफ में मार्क छोड़ना ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए डैमेज करके, लेकिन हम लोग को मतलब वो नहीं था, इंटेंशनल नहीं था। काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग रहा है मेरा सफर है इंडिया में। 8 साल का बच्चा था मैं जब इंडिया आया था, एंड देन आई लेफ्ट एट 26-27, तो मेरा पूरा जिंदगी उधर बीत गया। As you said, I was in Calcutta. Very few people know that we used to have a strong Armenian community there, and उसी का मतलब फायदा मेरे को मिल गया, क्योंकि वहाँ पे एक स्कूल है जो अभी 200 साल पुराना है, आर्मीनियन स्कूल, सिर्फ आर्मीनियंस के लिए। वहाँ पढ़ने का मेरे को मौका मिला। Then I did my +2 from La Martinieres for boys, which is one of the most prestigious schools in Calcutta. Then I came to In all JNU. of India, in all of India, In all actually, of La India as Martiniere well, College yes. of Calcutta is. Of course, Lucknow also, they have a branch. I mean, in the Lucknow branch, and then in Lyon, France. It's a brand, it's a name. Yeah. It's not one of those Delhi public schools and all where you have, I don't know, 50, 60 branches. It's a very limited branches, but it's a very famous place. So I was lucky to study in this prestigious old Armenian school. Then in that prestigious school, then came to JNU, did my bachelor's and master's. So it has been quite a journey, a lot of fun. I mean, लर्निंग एक्सपीरियंस। लेकिन एक समझ रहे आप, 8 साल का बच्चा, और फैमिली के साथ भी नहीं आया था, मैं अकेले आया था, इन द सेंस दैट कुछ और बाकी लोग भी थे, बोर्डिंग स्कूल था, लेकिन मेरे फैमिली से या जान पहचान कोई नहीं था ऐसे रिलेशन। आर्मीनियंस थे, आर्मीनिया से, ईरान से वगैरह, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे ज्यादा। हाँ, शुरू से बात करते हैं एक्चुअली कारण। तो आपके फैमिली में कौन कौन है, और आपके बचपन के, जब तक आप 8 साल के थे आर्मेनिया में, उनके क्या मेमोरीज हैं आपके? बचपन में हम लोग 4 बच्चे हैं। आई एम द यंगेस्ट, आई हैव 2 elder brothers and an elder sister. यहाँ पे मम्मी है, माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग अनफॉर्चुनेटली। तो हम लोग बचपन में जैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बड़ा फैमिली था, एंड देन इट वाज फुल ऑफ डिफिकल्टीज आल्सो, क्योंकि पापा के जाने के बाद सारे बोझ मामा के ऊपर आ गया था। मम्मी वाज वर्किंग, एंड देन बाकी लोग तो स्कूल जाते थे। खैर तब हम स्कूल भी नहीं जाते थे, हम 5-6 साल के थे पापा के जाने के उसमें दौरान। तो काफी मतलब स्ट्रगल के साथ, लेकिन काफी रिच थे हम लोग, क्योंकि इन द सेंस दैट वी वर 4 siblings, we had each other, we was, you know, through all the difficulties we would have fun, learn from each other and all. मारपीट झगड़ा करते थे मतलब in that sense it was a quite funny, fun and happening life in that sense. And then जब मैं स्कूल अभी क्लास 1 में था, शायद स्कूल जा रहा था, तब मेरे को पता चला ये सब मौका है इंडिया जाने का। माय ब्रदर यूज्ड टू गो फॉर सम रेसलिंग, कुश्ती में के लिए जाता था, तो मैं आई यूज्ड टू टैग अलोंग समटाइम्स। तो एक दिन ऐसे हम शायद वापस आ रहे थे या वहाँ जा रहे थे, मम्मी को मिला, मतलब ऑन द रोड, शी वाज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क। आपसे बात करनी है कुछ। मैंने बोला क्या हुआ, आप इंडिया जाएंगे? तो बोला इंडिया में जाऊंगा, क्या करने के लिए? बोला ऐसा स्कूल है वहाँ पे, एक मौका है, जाएंगे। तो मैं एकदम खुश, 8 साल का बच्चा हो, मेरे को कुछ आता पता नहीं है, बट माय इमेजिनेशन एज अ 8 years old, हम इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं था, एंड आई वाज अ बिग फैन ऑफ जंगल बुक। तो जंगल बुक में किसी को, वो बच्चा अनाथ बच्चा है भाई, जंगल में रहता है, उसको कोई तकलीफ परेशानी नहीं है, हमको क्या होगा? बोला हाँ हम जाएंगे, कहाँ जाना है? तो मैं एकदम थोड़ा शॉक्ड कि आप कैसे जाओगे, अकेले कैसे जाओगे, क्या है? तो मैंने बोला कि नहीं हम जाएंगे, मतलब आप बताइए कैसे क्या है। तो वो हम शाम को जब स्कूल आए, वो बताए कि आर्मीनियन वहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे चर्च ने ले जा रहा है, हमको एक मौका है ले जाने का, तो अगर आपको मतलब इंटरेस्ट है, मैं इस पे बात कर सकता हूँ। तो मैंने तब कलकत्ता का बारे में सुना, मैंने मैप खोल के देखा, कलकत्ता अब है कहा, it was on the map, it's right exactly the Bay of Bengal, no? And you can't interpret the map when you're an 8-year-old kid। बच्चा के लिए क्या मतलब, how do I know? I'm like यार इंडिया जा रहा हूँ, वो भी एकदम बीच में, आई बी एट द सी साइड रिजोर्ट टाइप का, क्यों नहीं जाऊंगा? हाँ कर लो मेरा पेपर वर्क, मैं रेडी हो जाने का। And then the whole process started because again, to go a little background in history, the school that I went to, the Armenian school in Calcutta, was established in 1821. So that was 190 something, 180 something years old back then. This was 20 something years ago, so 180-year-old school.
and because the Armenian community had dwindled, काफी बड़ा community रहा है इंडिया में, and Calcutta was one of the centers because the church, the community church is there, and Armenian community हर जगह जहाँ जाता है diaspora में अगर देखोगे, the community life evolves around the church, and then the church establishes institutions, school होगा, club होगा वगैरह, and then but the church is the nucleus that holds the community together everywhere. So क्योंकि the school was there and the church was there, but the community had dwindled. The local Armenians, to keep the school running and to keep the community going, they decided to sort of give scholarships to Armenians बाहर से. तो कुछ लोग हम आर्मेनिया से थे, we had students जो ईरान से आए थे, इराक से, अभी they are students जो म्यांमार से है, वहाँ पे पढ़ते हैं इस वक्त. तो I got this opportunity and so we knew someone who was working in the church, तो उनको पता चला था, ये ऑफर आया था इंडिया से कि कम्युनिटी कुछ बच्चे इकट्ठा करके भेजो, हम सब चीज स्पॉन्सर कर लेंगे, उनका एजुकेशन, आना जाना, खाना रहना, सब कुछ उनकी तरफ से. इट वाज लाइक अ स्कूलिंग स्कॉलरशिप ऑफ सॉर्ट्स. तो मेरे को जब पता चला, आई वाज लाइक cool, let's go. Then that's how it all started, and I still remember as a child the shock. I mean, I was too excited to come, but then जब जाने का दिन आ गया, I felt like मुझे जाना चाहिए कि नहीं, मैं रोने लगा. सब कुछ पेपर वर्क हो गया था, फिर रोने लगा, क्यों मेरे को भेज रहे हो? भाई तुमको तो जाना था, अभी क्यों रो रहे हो? तो in that sense I came, and it was January 26, 28. काफी ठंड थी तब in 2001. Winters तब like global warming इतना 2001 or you came in 2001? Okay. I came for the first time in 2001. 8 साल का बच्चा था तब. Then January, and then we flew from Armenia. It's very cold, tan and barf and all that. It's snowing everywhere, and we are all in our big coats and fur coats and all I was wearing. And then we back then we used to come through Moscow. तब ये fly Dubai, Sharjah, ये सब other options नहीं थे. तो हम लोग we used to come through Moscow, which was again cold. To Yerevan, to Moscow, we came all, and then we landed up in India. And the shock, because you're coming from all snow and then you end up in India, the temperature changed, the number of people you see as soon as you land, that cultural shock is like, हम कहाँ आ गए? ये कैसा? यहाँ पे बर्फ ही नहीं है? हम कितना क्यों यहाँ पे विंटर ही नहीं है? हम कब से सब ट्रैवल कर रहे हैं कि विंटर खत्म हो गया यहाँ पहुँचते ही? In that sense, we were in a shock, and then we went. Of course, it was a boarding school we were into with a lot of other Armenians, as I said, Armenian teachers and Armenian priests, but and a lot of Indian teachers and Indian staff. But we were kept in this boarding school condition, which has its perks, but for a kid, it also has its disadvantages. Because it's the first time when you are growing up, pampered with your family and all, sab kuch available hai, or at the notice, and then you get to this very in a rule book way. Kab utna hai subah, and then there's a thing you have to follow. A discipline. A discipline, yes, and an order. Yeah. 5 बजे उठते थे हम लोग पीटी के लिए, 5:30 बजे तक. Then we had to run. We had around 20 minutes, 40 minutes to have a bath and get dressed. फिर नीचे आओ, breakfast करो, फिर जाओ स्कूल में, and everything was controlled by the bell. घंटी बजी, ये करना है, घंटी बजी, वो करना है. So we had this very robotic sort of a life. And then after the first few days, everyone who had come, majority of us started crying, नहीं हमको वापस जाना है, हमको नहीं चाहिए. हमारे साथ धोखा हुआ है, हम लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहाँ लेके आए हम लोगों को. So some of them did manage to go back, but a lot of us did not, because initially when you are coming, I mean, the people who were managing the school, उतना तो समझदार थे कि भाई अभी आए हैं, टाइम लगेगा उनको एडजस्ट होने में, और एडजस्ट हम हो भी गए. And every time we used to go back, it used to be the same all over again, but it was fun. And then very happening, because you created your own family, फिर दोस्त बने, then you had your own besides the rule book, breaking the rules, getting punished for everything and all, वो सब memories उधर से आती है. But growing up, anyone who's been to a boarding school could possibly relate. It's a lot of fun, but it's also a lot of challenge for someone who's growing up. So, couple of questions here, Karan. As you shared कि बच्चे जो थे कुछ आर्मेनियंस मतलब आर्मेनियन रूट्स के ही थे, लेकिन कुछ इराक से थे, ईरान से थे, और कुछ आर्मेनिया से थे. But did you all speak a common language? Did you all speak Armenian with each other, and how soon did you adapt to the local language, culture, food, everything? Yes, we were all Armenians, क्योंकि वो स्कूल सिर्फ Armenians के लिए है. क्योंकि इसलिए हम लोग क्यों बाहर से आए कि कम्युनिटी, इट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1821 लोकल आर्मेनियंस के लिए जो कलकत्ता में रहते थे, ये इंडिया में इन जनरल, क्योंकि कम्युनिटी बड़ा था काफी,
there was the need. Armenians हमेशा जहाँ जाते हैं वो they established their school and the church. And in Armenia, in Calcutta, it was one of the most vibrant centers in the sense of community life outside of Armenia. And they had school, and then presses. They used to publish किताबें छपते थे उसमें, printing press थे. And it wasn't only Calcutta. Madras was a very important Armenian thing. Gujarat, Surat and all was a very important Armenian place and all. Mumbai was an important Armenian center. तो तब school मतलब Armenians के लिए था, and then the whole funds and all that was created to be utilized for the use of the Armenian community only, and to be utilized in India. अब इंडिया में Armenians रहे नहीं, अब किस पे खर्च करोगे? उसको यूज तो फंड्स यूटिलाइज तो करना ही है. फंड्स उठा के बाहर इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकते हो कहीं और जहाँ Armenians है. तो स्कूल चलाने के लिए क्योंकि फंड्स थे, तो कम्युनिटी ने सोचा उसको फंड्स हम लोग क्यों Armenians को जो बाहर के हैं, मतलब जो स्पेशली दोज इन नीड, जो फैमिलीज को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, उनको ये मौका दे दे. वो लोग आएंगे, हम लोग स्कूल भी चलाएंगे, कम्युनिटी भी बढ़ेगा, स्कूल भी, मतलब चर्च भी यूटिलाइज होगा. Otherwise you just dwindle and finish, right? Yeah. So then they started giving us, and we were all Armenians. That was a prerequisite. You cannot, if you're not an Armenian, you cannot be studying in that school. So sab hum Armenians the, but we had this very different. We had developed a unique dialect in the sense, if I can say so. Exactly. हम एक अलग आर्मेनियन बोलते थे जो आर्मेनिया से आए हैं. जो ईरान से आता है उनका एक अलग डायलेक्ट होता है, जो लोकल ईरानियन, उनका एक्सेंट और उनका जो इंटोनेशन जो है, इराक से आने वाला एक अलग आर्मेनियन बोलता है. मतलब है आर्मेनियन ही, लेकिन the use of words, the use of language अलग अलग होता है, जैसे diaspora. Yeah. And then it used to mingle up. जो अभी after a few years when we say sentence, it involves one word is in Persian, one word is in Arabic, one word is in Hindi, another word is in English. तो एक when we get together even now, काफी लोग हैं यहाँ पे आर्मेनिया में, जैसे जो ex students है स्कूल का, हम लोग मिलते रहते हैं यहाँ पे. So whenever we are sitting, automatically we switch to a different language, in that sense that we speak in that. जो एक hybrid type का language आप लोगों का hybrid Armenian, like exactly. And then people, if you are sitting and we generally loud, and then people sitting in a restaurant or a cafe, सब बाजू से देख रहा है, ये भाई बोल है Armenian, बोल क्या रहा है? है Armenians, लेकिन है कहाँ से? क्योंकि 5 मिनट के लिए they sound like Iranian Armenians, अचानक से they sound like Lebanon or Iraq and all that, and then they sound somewhere else. So they're just trying to figure out, are they Armenians from here? Are they diaspora Armenians? That's so amazing, because you came all the way to India और आप अपने ही community के different countries के लोग यहीं पर मिले. That's one aspect of it, एक तो है कि आपको यहाँ Indians मिले, दूसरा ये है कि आपको खुद के community के दूसरे countries के लोग यहाँ पे पहली बार मिले, जिनसे आप आज. And then most importantly, हम लोग Indian Armenians से भी मिले. हाँ, Indian Armenians तो उसको mention, क्योंकि वहाँ पे local है, local community जो they are the descendants of the the Indian Armenians. Some of them had intermarried. Some of them we had friends whose either mother or father was Indian. One side of them was Armenian and all that. So they had also this interesting mixture. They were localized, but as well as Armenians. And then when you're coming to a place to learn that आपके लोग यहाँ पे थे, and इतना strongly मतलब established है, जो school खोले, churches खोले, यहाँ पे community है, कुछ लोग है जो मतलब रहा है यहाँ पे, and then you get to know how strange. कलकत्ता में तो आर्मेनियंस का बहुत निशानी है. आर्मेनियन घाट है बिल्कुल सामने रेलवे स्टेशन के, आर्मेनियन स्ट्रीट है बड़ा बाजार में, जहाँ पर चर्च है, नाजरेथ चर्च. तो कलकत्ता तो क्लब है, सब कुछ है. मैंने वीडियो एक बनाया भी है कलकत्ता में क्रिश्चियंस के बारे में, तो उसका शुरुआत उधर से ही किया है, बिकॉज दे आर द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज टू अराइव हियर इन इंडिया, एक्चुअली a business community before the British, before the Portuguese. So हाँ, अगर आप देखोगे आर्मेनियंस एक्चुअली आपके इंडिया आने का स्टोरी शुरू वहां से ही होता है कि पहले वो लोग आए, सो ऑल दीज फैसिलिटीज वर क्रिएटेड, और आज के पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में आप यहाँ पहुंच पाए. काफी इंटरेस्टिंग ये है कि एक जो लोग यहाँ आए, मतलब यहाँ नहीं, वहाँ अभी इंडिया आए, वो आर्मेनिया से नहीं थे. मतलब आर्मेनिया एक इंडिपेंडेंट देश भी नहीं था, क्योंकि वी वर कॉन्स्टेंटली अंडर medieval times था, उस समय अलग हिसाब किताब था. हाँ, we were under Persian rule and Russian rule and Arabic. मतलब as an independent country after the fall of the Armenian kingdom, तो काफी साल 1918 तक नहीं था as an independent देश. तो Armenians that came to Iran, came to India, came
फ्रॉम ईरान, जो नादिर शाह तो इंडिया भी जानता है क्योंकि वो आया था इंडिया, मतलब पीकॉक थ्रोन चुरा के चला गया, तो मतलब वो सब जो कनेक्शन वो था। एंड शाह अब्बास वाज अनदर ईरानियन रूलर, जो अभी का जो नखीचेवान रीजन है, जो अजरबैजान का ऑन द अदर साइड ऑटोनोमस रीजन, वहाँ पे वो जब मतलब आता है, काफ़ी फैमिलीज को, Armenians, they were entrepreneurial, they were good at crafts and all that. So he takes around 600 families with him to Iran. चलो मेरे साथ, मैं आपको ले जाऊंगा वहाँ पे, आपको जगह वगह दूंगा, तो you establish the trade and connect me with the world and all that, in that sense build up my kingdom. So वहाँ पे in the Julfa area and in Iran and all that, northern parts of Iran, and of course in Tehran and other parts, the Armenian community is very strong. The strongest, we have a representative in the parliament and things like that. Iran may also, we have the thing. So the Armenians of Iran who went there, they were the ones who sort of established that connect with India predominantly, and then they started trading with India. यहाँ पे थे, सामान ले जाते थे, वहाँ आते थे, मतलब they back then जैसे trades होता था. Trading commerce of the medieval world. Yeah. So Karan, let's get back to your story, and I wanted to really know कि आप यहाँ आपने कितने समय में हिंदी सीखी, and how did you get adjusted to the food here, the language and the culture here? उसके बारे में बताइए. हिंदी हम काफ़ी लेट सीखे थे एक्चुअली, क्योंकि वो आर्मीनियन स्कूल में, इट वाज एन आईसीसी थिंग स्कूल, इंडियन दिल्ली बोर्ड, तो एंड वो फनी थिंग ये था कि बाकी लोगों को, मतलब आईसीएसई में हिंदी एज अ लैंग्वेज और बंगाली एज सेकंड लैंग्वेज कुछ तो एग्जाम देना है, एंड बिकॉज वी वर आर्मीनियन कम्युनिटी एंड वी हैव एस्टैब्लिश्ड लॉन्ग रूट्स एंड ऑल दैट, तो हम लोग को आर्मीनियन में मतलब एक देने दिया, तो वी वर सिटिंग इन एंड वी आर गिविंग बोर्ड एग्जाम्स इंडिया में, जो सेकंड लैंग्वेज है, आर्मीनियन इज एन ऑप्शन. अब समझ रहे, आईसीएसई No, I did not know कि ICSE ऑफर करता है. ICSE ऑफर करते हैं, एक्चुअली allow us to opt, like other people are giving Bengali हिंदी, हम लोग अपना दे रहे हैं आर्मीनियन, मस्त. तो एक मतलब एक that was a privilege we had, but that was also a big drawback, क्योंकि अगर नहीं होता था तो हम लोग जबरदस्ती सीखते ही स्कूल में, सिखाते भी थे, लेकिन क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था बोर्ड में, तो हम लोग हल्का में ले रहे थे और कोई उसमें प्रेशर भी नहीं डाल रहा था, सीखना है सीखो, नहीं सीखना, इन दैट सेंस. तो हम लोग बहुत ठीक है शुरू में सीखते थे, मतलब अल्फाबेट और कुछ पोएम, मछली जल की रानी है, जीवन उसकी बंद, मतलब रट्टे मार के जा रहे थे. कुछ ना कुछ एग्जाम ऐसे देख के, एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में कभी कभी रिसाइट करके निकल जाते थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था कि सीखना चाहिए, वाली सीखना तो चाहिए था. हिंदी, बंगाली एंड ऑल, बंगाली भी विश हम लोग को सिखाया गया, तो अगर सिखा देते तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन हम सीखने लगे जब क्लास 10 के बाद बाहर आए, क्योंकि तब हम लोग बाहर का दुनिया से इतना मिंगल भी नहीं करते थे. हाँ थे, हमारे जो स्टाफ थे, वर्कर्स थे, कर्मचारी और टीचर्स तो मेनली इंग्लिश बोलते थे, लेकिन स्टाफ के साथ हम लोग थोड़ा कोशिश करते थे हिंदी कुछ उनसे सीखना. पहले तो गाली वालियाँ सुनते, क्या सीखेगा आदमी, तो ये जितना भी बुरा इंसान स्लैंग्स ही सीखता है. स्लैंग्स हम लोग सीखते थे फॉर द फन ऑफ इट एंड ऑल दैट, पर कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन की हम लोग को उम्मीद ही नहीं थी कि कब आने वाला है काम, क्योंकि महीना में एक बार 2 बार बोर्डिंग स्कूल है, अलाउ करते थे 2-3 घंटे के लिए बाहर जाओ. हाँ, वो मेरे को आपसे पूछना था कि आपका हाउ डिड यू मिंगल विद द लोकल पॉपुलेशन आउटसाइड ऑफ स्कूल? Very rarely, we had a few. वहाँ पे एक आध स्कूल के सामने दुकान है, जो दोस्ती हो गई थी, हम लोग ज्यादातर शॉपिंग वहाँ से करते थे. एग रोल चिकन रोल का शॉप वॉप से जहाँ पे जाते थे हम लोग, चाउमीन खाने या एग रोल खाने. तब स्कूल भी बाहर से खाना अंदर लाना अलाउड नहीं था, तो वी यूज्ड टू गेट अ पॉकेट मनी हर महीना. तब जब शुरू में शायद 50 रुपया था महीने में देनी थी, इंक्रीज एंड ऑल दैट, अर्ली 2000. सो वी यूज्ड टू गेट 10 रुपया पर वीक. तो इकट्ठा करके हम लोग, एक कोई स्टाफ को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, जाकर हम लोग के लिए ये लाओ, और 3-4 रुपये उनको बख्शीश देते थे. तब हम लोग ऐसे, मतलब उनको, वो लोग छुपा के लाते थे, अलाउड ही नहीं था, तो उनको चेक नहीं करते, क्योंकि वो अपना खाना ला सकता है, तो वो ज्यादा था अपना लाता था, मतलब अपने लिए, लेकिन था हमारे लिए, तो हम लोग गुपचुप में खा रहे थे. कभी कभी पकड़ा जाके पनिशमेंट होता था, ये सब करके. तो इमेजिन कर रहे हो 10 रुपया में हम लोग गिन के, 3 रुपया का तब पार्लेजी आता था, 2 रुपया के मूरी बादाम हम लोग खरीदते थे, ऐसे करके कि शेयरिंग बेसिस में, कोई ये खरीदा कोई वो खरीदा, फिर हम लोग एक बैठ के एक साथ खा रहे थे. तो बाहर से इतना इंटरेक्शन था ही नहीं. बस अगर हम लोग
पनिश नहीं थे, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल है तो कुछ ना कुछ करते थे पनिश होने के लिए। तो अचानक से उधर से एक ऑर्डर आता था, एक हफ्ता के लिए, 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए पनिशमेंट, कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, मान लीजिए, या टीवी नहीं देख सकते हो। वो भी एक वो था, टीवी भी टाइमिंग था शाम को, मतलब वी हैड डेज वेयर वी कुड वॉच टीवी, हर रोज टीवी नहीं देखते थे, और वो भी कोई ना कोई कुछ करता था, क्योंकि वी हैड दैट सॉर्ट ऑफ अ यूनिटी। बोर्डिंग स्कूल है, नोबडी न्यू, मतलब कुछ मिल गया, कोई खिड़की टूट गया है, अब मैनेजमेंट आता था कौन तो रहा, हम लोग बताने वाला नहीं है। एक तो आधा लोगों को पता भी नहीं था कौन तो रहा, और जो पता था, यू आर नॉट गोइंग टू ऑब्वियसली स्निच इन दैट rat सेंस, out your friend or rat out, someone. एग्जैक्टली। तो एक कॉमन था कि भाई कोई नहीं बता रहा, ठीक है, सब पनिश्ड, ठीक है, फंदा इसी में। तो हमारा आधा जिंदगी इसी में बीतता था कि कभी टीवी से हम लोग पनिश्ड है, कभी उसमें स्विमिंग से पनिश्ड है, कभी खेलने से पनिश्ड है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वो था। लेकिन बाहर जाते थे केएफसी वेएफसी 2-3 घंटा के लिए, तो वी हैड वेरी वेरी लिटिल इंटरेक्शन। जब क्लास 10 कंप्लीट किए, तब वी वेंट टू 11-12 इन दैट अदर स्कूल्स एंड ऑल, तब बाहर जाना आना होता था। देन वी स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ मिंगलिंग। असली हिंदी तब हम लोग सीखे, क्योंकि दैट्स व्हाई वी डोंट स्पीक इन दैट शूड हिंदी और इन दैट बुकिश इंडियन वाला, क्योंकि हम लोग सीखे बाहर से, ऑटो वालों से सीखते थे, पता नहीं दुकानदारों से सीखते थे, जो मतलब गलतियां कर करके, and there's a lot of misuse करके words को। There was a time when I remember I abused an IAS officer because I didn't know what that word means. I picked up from the street, इतना commonly। and गालियां भी इंडिया में अभी मत बोल देना, मेरे लाइव सेशन में मत बोल देना। बोलने वाला नहीं हूँ, टेंशन मतलब। मैं ये बोल रहा कि इतना कॉमन था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतना, मतलब आर्मेनिया में इतना कॉमन नहीं है गाली वाली, ये सब मतलब नहीं दे सकते। वहां पे तो एक नॉर्मल है, नॉर्मल यूज करने के लिए। तो हम लोग सुन के सोचा भाई ये तो गलत वर्ड होगा नहीं, अगर इतना आराम से हर कोई यूज करता है सड़क पे चिल्ला चिल्ला के। हमको लगा, हम मेरे इंटरप्रिटेशन में हमको लगा हाँ, कि अब अच्छा ही दूसरे होगा। लैंग्वेज में किसी वर्ड का क्या इंटेंसिटी है, उतना समझ तो बहुत बाद में आता है ना। हाँ, इंटेंसिटी की बात नहीं, अब जैसे इनको व्हाट कॉन्टेक्स्ट इट इज आल्सो बीइंग यूज्ड। जब एक हाँ, कोई कॉन्टेक्स्ट एज वेल। मेरा तो वो था जो यूज में, मतलब वो कर रहा हूँ, उसमें एक कोई आदमी किसी को हेल्प करने के बाद वो गाली यूज किया था, मुझे लगा वो थैंक यू का कुछ ऐसा होगा, ओ अप्रिसिएशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ओ एंड आई वेंट टू द आईएएस ऑफिसर, मुझे वीजा का काम था, तो टू शो दैट आई एम ग्रेटफुल, मैंने वही शब्द can't यूज किया even उसको। imagine। वो बेचारा देख रहा है, आईएएस ऑफिसर है, वो देख रहा है मेरे को, भाई मैंने उसको अभी मदद किया, ये मेरे को गाली कर पूरा दे रहा है। ट्रायल एंड एरर से आप हिंदी सीखे। व्हाट अबाउट फूड, करण? हाउ डिड यू एडजस्ट टू द लोकल फूड एंड हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम Oh, आर्मेनियन फूड? it's very it's very different initially, obviously because of the spice and all that। थोड़ा difficult था, भले ही हमारा बोर्डिंग स्कूल में इतना स्पाइसी नहीं बनाते थे, जो तीखा विका, बिकॉज हम लोग स्कूल बच्चे थे तो तीखा खा भी नहीं पाते। लेकिन फिर भी द टेस्ट इज वेरी डिफरेंट, यूनिक। यू आर कमिंग फ्रॉम अ कंट्री इनटू, जो भी आप बनाओगे तो इंडियन ही ना। तो obviously we had that unique taste and all that, which we were very sort of, it took us a lot of time to adjust। There were some things Yeah. that we could eat obviously, and then we had a very calculated staple diet। breakfast में हम लोग को, we had that food sort of a thing, we knew what we were getting on Monday for breakfast, Tuesday for breakfast, Sunday को हम लोग स्पेशल बिरयानी मिलता था जैसे करके। तो it used to take a lot of time for us to learn, and then वहां पे एडजस्ट होना और बाहर का खाना में एडजस्ट होना, there was a different thing, because ठीक है, बोर्डिंग स्कूल में we got somehow used to it, and then we started eating and all, and perhaps enjoying it also। and then we used to eat from outside, जो एकदम बिल्कुल ही अलग था। and then we started not liking the Indian food made in our hostel in the boarding school, because it was too clean, too toned down, too non-spicy thing and all that। It was really sort of a Then Western you actually interpretation। got a hang of proper street food types, you know, हाँ, and क्योंकि Calcutta is legendary for its street food. I know, कभी कभी we used to get a sort of chicken roll and egg roll हमारे हॉस्टल में, and हम लोग तब चिकन रोल एग रोल बाहर के खाते थे। तो बाहर के खाने के बाद अंदर का एकदम लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, क्या तो बना रहे हो अब ये। जब आप आर्मेनिया वापस गए हैं 20 साल यहाँ रहने के बाद, तो अब आपको फूड में क्या लगता है? मिस करते हैं आप इंडियन फूड अब? मिस नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ पे अभी भी इंडियन फूड ही खाते हैं। जब हम मेरे दिमाग में आता है खाना बनाओ, पहले एक इंडियन मेन्यू घूमता है, फिर मैं सोचता हूँ आर्मेनियन का। अभी सीरियसली? अब मेरी आपका डिफॉल्ट मेन्यू इंडियन हो चुका है माइंड में? माइंड में वही है, वो खाना आपको एक दिमाग में बैठ गया है, खाना क्या है, यही सब है। तो रोटी ऑब्वियसली सब्जी दाल है रोटी खाना। सबसे, हाँ, राइस ये वगैरह। एंड नाउ वेरोनिका, माय गर्लफ्रेंड, उसमें भी शी इज आल्सो into, मतलब she know into music and Indian music and all that she loves, and she cooks Indian food, but she doesn't eat as much, but
she's sort of got hang of it, of cooking and all, तो वो भी मेरे लिए इंडियन खाना बनाती है, मतलब ये खाती नहीं है उतना ज्यादा. तो I've got this. I'm not sort of miss तो करते हैं हर कोई, मतलब because it's not that authentic in the sense that we are not feeling it in India, but we are in touch, and of course we have यहाँ पे Indian families हैं, Gujarati families हैं and all that, जो कभी कभी हम लोग मिलते, कभी कभी नहीं, काफी जल्दी मिलते हैं, तो वो लोग भी खाना बढ़िया खिलाते हैं. तो we find a way, and you have Indian restaurants in Yerevan, तो उसमें कमी नहीं है. तो कभी इंडियन खाने का मन किया, we always have So option. current school life में आप लोग how often would you go back to Armenia to meet your family? Once in 3 years. What? So, but because obviously it's a big school and we used to have different batches had come. So at one point we used to have 100 something students. So to expect the community to bear all the cost, we were not paying anything from our pocket. It was fully funded, right? In fact, you were getting pocket money and all also. वो भी, हाँ. तो कभी 3 साल में एक बार, क्योंकि वो ग्रुप्स थे, जैसे हम आए थे 2001 में, हमसे 1999 एंड में या अर्ली 2000 में एक और ग्रुप आया हुआ था, 2002 में दूसरा ग्रुप आया, 2003 में, तो हर साल एक ग्रुप था. तो इट वाज इन रोटेशन. तो इस साल हम गए, तो एंड एवरी ईयर देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप दैट वाज गोइंग ऑन अ वेकेशन. तो फिर 3 साल में हमारा फिर एक मतलब नंबर आता था. तो हर बार आप थोड़े से और एकदम सिग्निफिकेंटली बड़े होके घर वापस जाते थे. Yeah, and it was used to become very independent also, क्योंकि foreign आप बाहर जाते हो, you're living in a boarding condition, एक आपका mindset बन जाता है, and then you start sort of fending for yourself. You know, you get used to this family. I mean, not a life away from family. जो आर्मेनिया में लोग जनरली 18 साल में ये एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपल्सरी मिलिट्री है. तो 18 साल में 2 साल के लिए वो लोग आर्मी जाते हैं. फॉर मोस्ट ऑफ देम वो पहली बार होता है जो घर छोड़ के 2 साल के लिए कहीं और जाते हैं, जहाँ माँ बाप नहीं है, फैमिली मतलब ये नहीं है. दैट एक्सपीरियंस वी हैड व्हेन वी वर किड्स. 8 साल में आप आ रहे हो, और वही मिलिट्री इन द सेंस ऑफ मिलिट्री लाइफ, रेजिमेंटेड लाइफ था, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, हर चीज टाइम पे, हाँ, you had हर चीज, हाँ, जैसा होता है हॉस्टल. हाँ, हॉस्टल लाइफ, यू कुडंट जस्ट गेट अप एंड से मुझे मतलब 2 बजे खेलना है, वैसा नहीं है. 2 बजे आपको 1 बजे 1:30 बजे खाना मिलता था, 2 बजे तक. फिर you had to sleep till 2 to 3 o'clock was compulsory nap time. You had to be in bed and सोना ही सोना है जबरदस्ती, क्योंकि 3 बजे से 5 बजे तक that was the playing time you had to be down playing. खेलना है, मन भले करे या ना करे. हाँ, डॉर्मेट्री में नहीं रहना, नीचे जाओ, खेलो कूदो नाचो, जो भी करना है नीचे जाओ, लेट नहीं सकते हो आराम से. मतलब then 5 to 6 you had to 5 to 6 and all, स्नान करके नहा लो, जो भी करना है. फिर we had study class शाम को till 7 o'clock 7:30, पढ़ना है, होमवर्क करो, पता नहीं क्या करो. तो इन दैट सेंस, कारण चलिए अभी हम लोग एक काम करते हैं, थोड़े से आपके कुछ पिक्चर्स देखते हैं, और उसके बाद आपके स्कूल लाइफ का जो एक बड़ा चैप्टर था जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने बात किया, उसके आगे के लाइफ के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो फोटोज मैं शेयर करती हूँ, एक सेकेंड. मैं फोटो दिखाऊंगी आपको, बस क्विकली बताना है कि उसमें क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं. ठीक है, ओके. मेरा यही कमजोरी रहा, मैं ज्यादा फोटो खिंचवाता भी नहीं था. अभी जब व्हेन आई लुक बैक, काफी जगह हम जाकर घूमे और फोटो भी मेरे पास नहीं, या किसी और से खिंचवा के मांगे भी नहीं. तो हम यही देखते कि आपका फोटो कहाँ गया. तब कौन सोच रहा था कि कभी आओगे फिर मिस भी करोगे वो सब. ये दिख रहा है फोटो, ये दिख रहा है, ये हमारा स्कूल है. ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ फोटो को. आई थिंक ये आप हैं. हाँ, ये मैं हूँ. दिस वाज maybe early 2000s, either 2001 or 2, जब नया हम लोग आए थे. ये 2002 होगा, 2003 होगा, नया आए थे, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे जो 2002 में आए थे, तो 2001 की फोटो नहीं है. तो दिस इज आवर इन फ्रंट ऑफ आवर लॉन, स्कूल लॉन, ग्रुप फोटो हम लोग खिंचवाए थे. तब देख रहे हो कितना छोटा था हम तब. बहुत छोटे बच्चे हैं सारे, सीरियसली बहुत छोटे. अभी ये सब बड़े हो गए, मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड, दे हैव द किड्स ऑन देयर ओन एंड ऑल दैट. कभी मिलते रहते हैं. तो ये आपको कारण क्या मिल रहा है? ये एक प्राइज मिल रहा है शायद. फर्स्ट इन इंग्लिश हम आए थे कुछ क्लास में, कुछ ऐसा अवार्ड सेरेमनी, हर साल अवार्ड सेरेमनी होता है ना स्कूल में, वो सब तो गिफ्ट हम लोग को मिलते थे. So this was a prize I got. It's one of the government officials, and the person in black was our principal then, Mr. Dias. What about this? Is this you?
Yes, that's me. ये भी एक ग्रुप फोटो है हमारा बचपन की, जब हम नए नए गए थे. बहुत तभी क्यूट. you see the guy at the back and all that. We've got a mixture of things. I mean, different Armenians and all that. The guy at the back, you can see, he's a local Sorry. Indian Armenian. अच्छा, ये this one. Yeah, he's an Indian Armenian, for example. So we had this very हाँ, healthy blend of अलग-अलग जगह से Armenians अलग आए. अलग जगह के. How about this? This This is आगे our वाला बच्चा is you, है ना? this is yes our choir thing. I mean, I'm saying choir. We were deacons. कभी एक interesting ये भी है कि जब हम गए थे शुरू में, we had an Armenian priest. Then काफी साल तक कोई priest ही नहीं था. लेकिन church को use करने के लिए, so we formed this sort of group of deacons, so called. So we used to coordinate with the choir. We had a choir in the school and the church. तो हम लोग मास अपने ही कर रहे थे, बिना कोई priest का, बिना कोई officer, someone officiating. So we used to sing our parts, skipping the priest part जो main होता है ना, उसका part skip करके. तो we used to sing all the deacons part and the choir used to sing. So we used to keep the church going. हर Sunday हम लोग church जाते थे, कोई बिना any presiding officer ये भी. And then we used to conduct the mass. And then when the priest came, वो काफी हैरान हो गया था कि आप लोग ऑल्टर कैसे जाते हैं. हम लोग ऑल्टर में हम लोग गाते हैं. बोला भाई आप विदाउट अ प्रिसाइडिंग प्रीस्ट यू कैन नॉट गेट अप ऑन द ऑल्टर. हम बोला भाई हम कब से कर रहे हैं, 1-2 साल से आराम से चल रहा है. सो वी सेड नो, आफ्टर दैट वी विल सिंग फ्रॉम नीचे, क्योंकि यू आर नॉट सपोज्ड टू क्लाइंब द ऑल्टर विदाउट थिंग बेस्ड ऑन द शूज. तो हमको पता भी नहीं था और हमारे पास प्रीस्ट भी नहीं था, कराना है. दिस इज मी इन बिहार, सासाराम. इफ आई रिमेंबर करेक्टली, दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट वेडिंग्स, इंडियन वेडिंग्स आई अटेंडेड. ये भी एक कल्चरल शॉक था मेरे लिए. This Kera, this I'm काफी old over here. It was early 2010, 11 or something like that, if not 12. तो सासाराम गए थे, and then in the middle of the night, house रात को जाती है, दूसरा मतलब गाँव लड़की के पास, मतलब then you sit outside, एक show होता है, there's you know all this random women dancing and entertaining the crowd, and I was like, what the hell is going on यहाँ पे? ये कौन है ये ladies? First time Indian शादी देखो, it is a little overwhelming. बहुत कुछ हो रहा होता है. Yeah, and then difficulty. This is also in Sasaram, one of the first villages I went to in Bihar. विलेज में आप इतना गोरा लड़का पहुंचा तो क्या रिएक्शन था लोगों का? काफी an interesting. This is Mkrtchyan. He is the co-founding president of our NGO, Indo-Armenian Friendship NGO. His wife is Armenian. He's a very good friend, a guide, and all that. He got me into JNU because in some sort, because he's also next JNUite. तो ये उनका दोस्त का एक भाई का शादी था जो अभी फोटो देखे, तो उसमें so I was lucky, तो वो हमको भी ले गए साथ में. तो we went वहाँ पे सासाराम में, and I'm in this village and all. जहाँ it's not like वहाँ लोग ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ पे foreigner नहीं देखे. ठीक है, maybe the ladies and all that क्योंकि नहीं गए. We had few people who are graduates, they were studying in BHU and all that from the village. So ये लोग they had been outside, but there were a lot of people, especially women, though इतना it's not who a did not have that level of exposure, so वो थोड़ा सा surprise. वो थोड़ा सा था, and I'm having a bath with the hand pump over there, and I have all soap on my face, my eyes are closed, and then I wash my face. I open it, suddenly half the village is in front of me looking at this foreigner having a bath on the hand pump. मेरे के लिए काफी वो था, उनके लिए भी interesting रहा होगा. This is also Sasaram Shesha Suri's tomb. Oh, is that so? Is that Shesha Suri's tomb? Wow. इसके बाद अभी हम लोग एक सीरीज ऑफ पिक्चर्स देखेंगे जो कारण आपने इंडिया में काफी घूमे आप इंडिया, आपके पिक्चर्स से पता चल रहा है. हाँ, काफी ज्यादा, मतलब आगरा, राजस्थान and all that. ऑलमोस्ट हर जगह का पिक्चर आपने को. ये कहाँ का है? ये I think it's on the Ghat in Mumbai. जब हम गए थे मुंबई, वहाँ पे एक बाबा जी था बैठा हुआ, इतना शांत. ये वाराणसी में है, बनारस में. अच्छा, ये एक और आपके बचपन का काली पूजा. हाँ, काली पूजा है, दुर्गा पूजा है ये, उसमें शायद कलकत्ता का ही है ये फोटो. हाँ, फिर ये यहाँ गोल्डन टेम्पल. मैं तो ऐसे ही करके कोई देखेगा मतलब एकदम वो कर रहा हूँ, मन्नतें मांग रहा हूँ किसी का. टिपिकल टूरिस्टी पिक्चर्स लेते हो ना कभी कभी, ये सब होता है. ये देखो टिपिकल टूरिस्टी पिक्चर. जामा मस्जिद. ब्यूटीफुल. हाँ, हमारे दोस्त के साथ हम गए थे एकदम एक बार. अच्छा, ईद था शायद. ये नैनीताल में है. I forget the name of the मंदिर, but वहाँ पे सब ऐसे ही have this bells. वहाँ पे एक ट्रेडिशन है, जब मन्नत मांग रहे हो पूरी होती है
तो you donate a bell, Tie a bell. tie Okay, a okay. bell over That's there. why all तो these काफी bells are काफी there. size are there, all sort of small bell to huge bells, तो काफी है वहाँ पे, बहुत ही Okay. interesting और सुंदर जगह है ये भी. Nice. And this one? This one is in, I think it's in Karnataka, if I'm not mistaken. कहाँ पे है ये? It's one of the places I went to, or Hampi. Sorry, Hampi. I think it's in Hampi. Okay. When I had gone, yeah. And this funny This is picture? Goa. This is गोवा. Goa. लग ही रहा है Goa. सब गोवन वाइब. चलिए इसके बाद आपका थोड़ा सा जेएनयू टाइम्स का पिक्चर देखते हैं. ये तो इसमें मैं भी हूँ. This is our iconic hostel night and Shiki's decoration and all that. Yes, वो yes, अलग magic gorgeous, करती है. gorgeous, उसका yeah. talent अलग से है. Yes, now she is a successful Interior interior designer. designer. Yes. This one is Holi in JNU. ये भी होली है. We have, this is our friends. The David is also from Armenia. वो तब वहाँ पे IAMC में कर रहा था अपना कुछ journalism का, and this is one of our friends also from JNU. Okay. Okay. ये So, सब है तो थोड़ा बहुत. couple of pictures more I have which are about your life after JNU. This is in our office in Yerevan. We run our Indian Cultural Center जो हम लोग चला रहे हैं. तो उसमें उसका फोटो है. ये भी हम लोग Indo-Armenian Friendship NGO. हाँ कुछ पूजा कर रहे थे तब. ये हम दिल्ली में, मतलब इंडिया में वोसी में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ है जो फॉरेनर्स का, मतलब Stop sharing हो गया है क्या? शायद. हाँ ओके कोई नहीं, एक दो ही पिक्चर्स बचा था. बट यार थैंक्स करण, बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर्स था. बहुत अच्छा लगा. एक फ्रेंड लिख रहे हैं कि कारण लव्स बिहारी थाली. वी हैड वो इट तो है. I love all thalis. Thalis is another थालीज. वो. यू रियली लाइक थालीज है ना? आई नो. या I've never been able to पूरा खत्म करना. कहीं भी हम गए हैं, क्योंकि एक बात, एक तो है अपने में बहुत, और एक खत्म करते हो, you before you celebrate, भाई एक खत्म हो गया, पता नहीं ये कहीं से कोई प्रकट होकर फिर भरता है वो. एक और आइटम आ जाता है. you never know where they come from and how they notice that you have finished it. अचानक से कोई आकर पूरा भरेगा कि भाई पेट भर खाओ. अरे हे पेट भर गया. They feel like no, they have to feed you to the fullest. So कारण आपका जेएनयू में कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब आप जेएनयू आ गए तो हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? JNU एक अलग ही दुनिया है. It's a very different. It was देखो, एक पहली बार you are getting into a very sort of a mature, if I may use the word, in a space. काफी interesting था. It was another culture shock for me because of the abundance of, for example, left activism over there. क्योंकि I come from a former Soviet republic. तो मेरे को communism and all that is, of course, it has a different vibe to us. हम लोग उसका वो मतलब रहे हैं फॉर्मर सोवियत यूनियन में, तो वी डोंट हैव फोन मेमोरीज ऑफ इट. एंड देन उससे पहले हम कलकत्ता में भी थे. वो भी तब ममता बनर्जी की गवर्नमेंट बनी नहीं थी, तो इट वाज अ लेफ्ट गवर्नमेंट until I came to JNU. It was 2011, I think, when Mamta Didi took over of Bengal. But तब मैं यही सोच रहा था कि मैं आर्मेनिया से मैं आया हूँ, वहाँ पे तो कम्युनिज्म था ही. फिर कलकत्ता आया, वहाँ पे कम्युनिज्म है. अभी जेएनयू आया हूँ, यहाँ भी कम्युनिज्म है. क्यों मेरा ये पीछे क्यों कर रहा है कम्युनिज्म? और एक इंटरेस्टिंग, एक शॉकिंग वो था एक्सपीरियंस. क्योंकि बस ठीक है, लेफ्ट एक्टिविज्म, कम्युनिज्म, वो सब बाद में पता चला क्यों, क्या, कैसे. लेकिन जब व्हेन यू एंटर अ प्लेस एंड यू सी, and you always hear about JNU, एक progressive जगह है, and then you see Karl Marx and Lenin, you will like, it's sort of, you have that thing of, भाई progressive जगह तो है, ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, you know. In that sense, you don't associate, because obviously when you have that baggage of negative thing coming from history about communism, to see that being sort of celebrated also is not something you automatically interpret as being progressive. It's like, भाई बड़े regressive यार, उनसे क्या चाहिए आपको, हटा दो. In that sense. So right. Then you had a stint with right-wing politics also in JNU. I did. It was and also thanks to again the presence of communism over there. It was like, यार इसको हटाना है, किससे. Then Karan joined ABVP. I was there. Yeah, I was with ABVP. And it was also that World Organization for Students. वो भी थोड़ा मतलब right leaning है. काफी interesting experience था मेरे लिए. And you cannot be in JNU and not be some sort of
politically active Exactly. You members. cannot be in JNU and not be politically active in Uh, some way or and then and then that so used to always be people who knew me and all like, क्या तुम एबीवी में हो? And I was like, क्या तुम कम्युनिस्ट हो? And like for them, तुम कैसे हो सकते हो एबीवी में? And I'm like, तुम अभी क्यों कम्युनिस्ट हो? So we had that sort of a thing. उनके लिए शॉकिंग था कि कोई फॉरेनर एबीवी में हो सकता है. And मेरे हाँ, लिए ये शॉकिंग था कि कोई अच्छा हमने यहाँ पे लाइव में डिस्कस कर लिया ताकि थोड़ा ये ऑन रिकॉर्ड आ जाए कि जेएनयू इज नॉट जस्ट प्योरली लेफ्ट, ये यहाँ पे ठीक ठाक एक राइट विंग सीन भी चल, और अब तो खैर बहुत स्ट्रांग हो गया है जिसमें अभी स्ट्रांग हो गया है, फॉरेनर्स भी काफी नहीं ज्वाइन था. करते हैं. हाँ, foreigners, of course, foreigners JNU politics में join गए. You had Taylor at one point who won president's post in JNU from ISA. It was Taylor, I think, if I remember the name correctly. JNU से president रहा था या कुछ ऐसा. ISA से left party से. तो foreigner हो या कोई और JNU में घुसना है मतलब politics से you either become aware or some sort of activism तो है, you either do. At this point, I'm just going to request our audience कि अगर आपको करण से कुछ भी questions पूछने हैं about his life in India, about his experiences, कोई भी बात अगर आपको पूछनी हो तो please comment section में लिखें और मैं उसको बिल्कुल अभी पूछूंगी. So Karan, what has been your happiest moment in India? Can you name maybe one or three, whatever? इट्स वेरी डिफिकल्ट. उसमें 17 साल रहने के बाद मतलब हैप्पीएस्ट मोमेंट एक या दो आइडेंटिफाई करना काफी मतलब मुश्किल होगा. इट वाज फुल. आई मीन आई स्ट्रगल टू फाइंड अ मोमेंट वेयर आई वाज नॉट हैप्पी इन दैट सेंस, क्योंकि इतना हैपनिंग है एंड इतना interesting है कि if you could not, it wasn't something that you could carry on in that the negativity or that sadness you could carry on, because mood kharab hua bas pakro jao Manali in that sense, right? So there was that constant shift that you were able, the freedom and the fun that you could just go to one place, and the fact that people are so approachable. It's very difficult. यहाँ पे आप किसी को randomly नहीं जाकर टोक के कुछ भी बोल सकते हो वहाँ पे. तो मतलब लोग generally in the West लोगों को अजीब लगेगा कि तू क्या मतलब है तुम्हारा. In India you could just randomly walk to any person, चाचा कुछ बताओ, and then you sit and start गप्पे मार रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, आप चाचे को कुछ चाय भी बोल रहे हो. सिगरेट पी रहे हैं बैठ के आराम से अनजानों के साथ, कोई हाँ, वो नहीं. तो you never had the opportunity. I mean, if you are outgoing in that sense and you are open to talking to people, you could never sit alone and in your own अपना घम पे एकदम वो मना रहे हो. You could easily go and in 5 minutes you would forget what you were sad about, क्योंकि इतना कुछ happening है बाहर. And then जो बाहर भी, even without talking to someone, the scenery just outside, once you step out, इतना मजेदार चीज है, you automatically start laughing because कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता है जो आपके लिए funny है, interesting है, और एकदम जो करो. आपका लाइफ स्पेशली आपने उसको रखा भी बहुत हैपनिंग बना के. यू कॉन्टेस्टेड फॉर हॉस्टल प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑल्सो, है ना? ऐसा नहीं कि फॉरेनर है उतना बहुत कोई सपोर्ट, ये पूरा सपोर्ट था, नेक टू नेक इलेक्शन था एकदम. आई रिमेम्बर हम लोग आपके लिए कैंपेन किए थे. Yeah, it was. एक दो वोट से शायद यू हैड लॉस्ट एंड काफी. Yeah, a few words, and then Tia, our good friend Tia Yeah, Sangla, became the president and all that. Yeah, it was fun. Coffee happening, and then I also contested in the International Students Association as well. वहाँ भी हारे थे हम, तो एकदम इलेक्शन जीत I know. वहाँ भी one of our Moroccan friends won by 9 votes or something. फॉर्मर नॉन डेमोक्रेटिक प्लेस से आके इंडिया में आपने हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके डेमोक्रेसी का भी पूरा मजा उठाया, नहीं कर? हाँ, मतलब नहीं, when I was born Armenia was already a sort of a democracy, क्योंकि सोवियत यूनियन तो I'm 92, तो 91 में सोवियत यूनियन का ऐसा खत्म हो भी गया था, so we were budding democracy in that sense. So but we did have other students from other countries who were not as sort of lucky when it comes to their local governments. तो काफी JNU तो it teaches you outside. हम लोग क्लास में क्या पढ़े, खैर हम जो जर्मन में ही थे, इतना वो मतलब लैंग्वेज में थे काफी, बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस या सोशियोलॉजी या हिस्ट्री उसमें नहीं थे. तो बट यू आउटसाइड ऑफ द स्कूल, आउटसाइड ऑफ द क्लास बहुत कुछ सीखते हो JNU. मतलब it really teaches you life. It makes you
एक चीजों को जो आप हमेशा क्रिटिकली देखते हो, उसका सामने करते हो आप अचानक, वो कोई भी किसी कोई भी इशू होगा, मतलब जो होगा वो कास्ट सिस्टम को लेकर या अलग रिलीजियस को लोगों को लेकर, सेक्सुअल माइनॉरिटीज को लेकर, इट्स अ प्लेस वेयर यू ऑलवेज नॉट ओनली हैव डिस्कशन अबाउट देम, तभी आमने सामने मिलते जुलते हो, एंड देन योर एंटायर प्री कंसीव नोशंस जो थे इन कम्युनिटीज के बारे में, वो सब शैटर हो जाता है, क्योंकि पहली बार अगर आप when you grow up in a very small thing, for example, I mean, not something that it affected me personally in that sense, but as an example, कभी one example we had, आप एक मुसलमानों का बारे में आपका एक सोच आते हो, पूरा जेएनयू में आपका एक दोस्त बन जाता है, या हिंदू राइट विंग का बारे में जो है तो होता है, या पता नहीं कोई भी ऐसे कम्युनिटी के बारे में, फॉरेनर्स का बारे में कोई होगा, अफगानियों का बारे में क्या क्या लोगों को पता नहीं, वी हैड अ लॉट ऑफ अफगानीज हु वर लाइक, इनसे बात करके बोला भाई ये न्यूज़ बकवास बोल रहा है, क्या बात कर रहे हो, अब यही लोग तो है। तो इन दैट सेंस वो काफी लोगों के लिए इट वाज द फर्स्ट टाइम स्टेपिंग अप इनटू सोसाइटी एंड ऑल दैट, इसलिए पीपल बिकम वेरी एक्टिव आल्सो इन पॉलिटिक्स, क्योंकि अब समझ बिहार से आ रहे हो या राजस्थान से आ रहे हो, कोई विलेज से या कोई छोटा टाउन से, जहाँ जनरली अक्सर 6 बजे 7 बजे के बाद घर जाना होता है, मतलब बाहर नहीं हो सकते, देन यू कम टू जेएनयू, इज फर्स्ट फ्रीडम यू टेस्ट, अचानक से 10-11 बजे की रात को आप बाहर घूम रहे हो, मार्शल जुलूस निकलती है गंगा डाबा से चंद्रभागा, लोग बाहर है, डफली बजा रहे, ये सब आप कभी देखे नहीं होते हैं ना, तो इसलिए वो हो जाता है कि भाई यही लाइफ, ये भी लाइफ है एक, and then you start becoming more independent in that sense. लेकिन कारण आपके इतने हैप्पी मोमेंट्स के बीच में कुछ टफ टाइम्स भी तो हुए होंगे इंडिया के अंदर, जब आप रहे हैं इतने साल, तो इतने सालों में कोई डिफिकल्ट मोमेंट्स आपके? नहीं, डिफिकल्ट तो है, व्हेन नो मैटर हाउ मच यू एंजॉय, बाहर आप रहते हो अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम, तो एक मतलब डिफिकल्ट टाइम्स होता है, एंड देन यू फील लाइक कुछ तो कोई तो होता, अगर मतलब खास कुछ अगर होता, कोई होता हमारा फैमिली से या रिलेटिव से, जिसके साथ शेयर कर पाते हैं, वो होता है, एंड देन वी आई टू स्ट्रगल, कि आपको पता है मेरे को कितना इंडिया में रहने का वो था, देन समटाइम्स वीजा एक्सटेंड करना मेरे लिए काफी मुश्किल होता, क्योंकि रूल्स यूज्ड टू चेंज, एंड देन इंडियन गवर्नमेंट एक टाइम पे बोला कि आपको हर बार 5 साल के बाद आपको जाकर नया वीजा लेके आना चाहिए, मतलब हम एक्सटेंड दोबारा नहीं करेंगे, उसके लिए मेरे भी काफी डिफिकल्टी मतलब फेस करना पड़ा, क्योंकि मेरे वापस आर्मीनिया आकर लौटना पॉसिबल नहीं था, वी हैव कंपल्सरी आर्मी होते, अगर हम यहाँ आते 2 साल मेरे को आर्मी में जाना होता, तो फिर एजुकेशन का बीच में ये नहीं करना चाहते कि आधा छोड़ के जाओ आर्मी में, तो एक ये वो मतलब काफी मोमेंट्स आते हैं कि व्हेन यू फील मतलब डिफिकल्ट है, यू सॉर्ट ऑफ फील कि चैलेंजिंग है, पर उतना भी वो नहीं, इट वाजंट लॉन्ग, यू नेवर सिट बिटवीन अगेन, हम कोई ना कोई अचानक से दरवाजा खोल के आता था, चलो इधर चलो चाय पीने, इन दैट सेंस यू वर नेवर लेफ्ट अलोन। ये मैं यहाँ पे ये भी शेयर करना चाहूंगी कि मेरे तो शादी का बहुत काम हुआ है आपके रूम से, पैकिंग ही पूरा गिफ्ट्स का हुआ है, 2 रात तो हमने कारण को उसके रूम से डिस्प्लेस कर दिया था, मेरे भाई बहन सब आए हुए थे, और हॉस्टल में मिलके, क्योंकि दिल्ली से सब कुछ हो रहा था शॉपिंग वगैरह, तो हॉस्टल से ही सब कुछ हो रहा था, कारण पता नहीं कहाँ, ही इज सो जेनरस, वो अपने आप ऑफर करके बोलते तुम रखो रूम, कोई बात नहीं, मैं कहीं भी एडजस्ट कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, जेएनयू में इतना फ्रेंड्स है, किसी का रूम में हम जाकर सोते थे, और ऑफ कोर्स वी हैड रनंजय रोजाना, जो मेरी सिस्टर है इन दैट सेंस, आवर एनजीओ फाउंडर्स, वो बसंतकुच में रहते थे तब, तो आई यूज्ड टू गो एंड स्टे विद देम आल्सो। मेरा जेएनयू बहुत कम ऐसे हुआ है जब मैं ताला लगा के चला गया, क्योंकि जनरली इट वाज ओपन। एक टाइम मेरे को याद है, कहीं जाने वाले थे हम लोग, शायद मूव वॉक के लिए जा रहे थे या कुछ, तो रात को मैं ठीक है मैं जाकर कमरे से जूता लेता हूँ अपना, घूमूंगा, कोई थी, पता नहीं अभी तक कौन है, किसी का रिलेटिव थी जो मेरे बेड पे सो रही थी, मैं गया, मेरे को पता भी नहीं था कोई आता, इतना फ्री था मेरा रूम कि कोई भी आता था जाता था, तो मैं क्या जीता, वो बैठ गए, बोल रहे वैसे कैसे घुस सकते हो यहाँ पे, मैं बोला मैं अपना शूज लेके बस जा रहा हूँ 1 मिनट में, मेरे को भी पता नहीं था मैं क्या बोलूं, वो बोले नहीं लेकिन क्यों, बोला मैं रूम मेरा है, ऐसे कैसे आपका रूम है, अभी तक मेरे को पता नहीं वो थी कौन और किसका रिलेटिव, उसके बाद मेरे को पता भी नहीं चला, जब हम लोग नाइट वॉक से मूव वॉक से आए वो तो चले गए थे, मैं पता भी नहीं किया, लेकिन इतना ओपन था कि आप आराम से दरवाजा खोल के छोड़ दो, कोई आता था कोई जाता था, तो it was fun. So Karan, after all this 17 years you said, right, 17 years of your whole journey in India, जब आप वापस आर्मीनिया गए, तो finally how did it strike you,
the similarities and differences with India and Armenia, between India and Armenia? Culturally, both similarities है in that sense. We were what in historical, besides the historical connections, family values and nucleus family and things like that. वो सब है. But काफी, because when I came back in 2018, I came back after 8 years. उससे पहले 2010 में आया था एक महीना के लिए, शायद हाँ, तो एक दो महीना के लिए 2010 में आए थे. फिर 8 साल कभी नहीं आया, मतलब घर वालों से मिला ना कुछ, फोन पे वीडियो कॉल पे, बाकी आर्मीनिया आए नहीं थे. काफी चेंजेस हुए थे आर्मीनिया में तब एक मतलब हम जनरेशनल चेंज, मॉडर्नाइजेशन एंड एवरीथिंग. बट व्हेन यू कम बैक सडनली, आपका आप म्यूट पे है. या सॉरी, मैं कह रही हूँ 8 साल बहुत लंबा समय होता है, उसमें हाँ, और सब कुछ काफी बदल जाता है. वो काफी लोग, मतलब वो शौक भी होते थे जब इंडिया में, मेरे दोस्त वो वगैरह से पूछते थे कब आप पिछले बार गए, 8 साल पहले 2000. हाँ, तब से नहीं गया, 3 साल से 4 साल से, क्योंकि बाकी लोग तो इंडियन स्टेट से है अक्सर, एंड फॉरेनर्स आल्सो कुड गो एंड कम, उनको वो सब प्रॉब्लम्स नहीं थी जितना मेरे को है. तो they would also get shocked कि इतना साल से आप गए नहीं हो, मम्मी से नहीं मिले वो करके, लेकिन मजबूरी थी तो क्या कर सकते थे. तो when you come back, especially after India and all that, it looks very Sonata, very, very quiet over here. And like, you don't get that honking noise, and you don't get that constant chatter and all that. शांत है, इतना लोग भी नहीं है. आर्मेनिया की पॉपुलेशन क्या है, 25-30 लाख पूरा देश में. वहां पे तो एक विधायक चुना जाता है 25-30 लाख में, बहुत से. तो तो पूरा देश का, मतलब समझ रहे हैं, 25-30 लाख का एक देश है पूरा पॉपुलेशन का. And we don't have, and that also the whole majority is concentrated in the capital. Out of the 3 million that we have, 1 million तो येरेवान में रहता है, the density. बाकी 2 million is spread in the rest of the country. तो if अब येरेवान में ठीक है, लोग दिखते हैं, येरेवान से बाहर उतना भी वो नहीं है, खासकर if you go on the outskirts. तो it's a very major shift on all that, in that sense. इतना लोग नहीं है, इतना vibrancy भी नहीं है, क्योंकि Armenia is very, we do have minorities in that sense. We have Yazidis who are here. We have the Russian thing minorities. We have Kurds and all that. But they are so assimilated also, in the sense you don't see the difference. In India, the cultural difference and the vibe is so much. यहाँ पे if you see Yazdi, you see an Armenian, you don't tell the difference. सब एक ही जैसा दिखते हैं, मतलब they don't have that clothes and all that. But in India, you have that vibrance, you have that difference and all that. So that shift where suddenly you see सब एक तरह का लोग है. Whereas in India, you see all the different आप cultures. एकदम डाइवर्स लैंडस्केप से एक थोड़ा सा होमोजेनस टाइप के लैंडस्केप में चले गए. हाँ, so it's a different feel. Of course, देश है आपका, मतलब. एंड हिंदी नहीं बोल पाते होंगे इतना वहां पर, जो आपका एक तरह से ऑलमोस्ट सेकंड लैंग्वेज तो खैर बन ही गया है. Hindi abhi मतलब luckily because we run this Indo-Armenian Friendship NGO, and we established this Indian Cultural Center and all, तो फिर भी बोलना होता है. We run cultural programs. यहाँ पे काफी इंडियन स्टूडेंट्स है जो मेडिकल में पढ़ते हैं, तो उनसे मतलब दोस्ती हो गई और प्रोग्राम में मिलते हैं. इंडियन फैमिलीज है एक आध जो यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, मतलब अपना धंधा कर रहे हैं या कुछ, तो कभी कभी ऐसा मौका मिलता है बात करने का, कि तो दोस्त वगैरह है जो इन टच हम लोग रहते हैं. तो बताइए आपके उस काम के बारे में, इंडो आर्मेनियन फ्रेंडशिप एनजीओ वगैरह जो आप अभी इस वक्त वहां पर काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए. हाँ, वो एनजीओ अभी 10-12 साल की है. मतलब इट स्टार्टेड इनिशियली एज अ फेसबुक ग्रुप, जो उसका को-फाउंडर्स है रनंजय एंड रोजाना. इट आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ रोमांटिक लव स्टोरी, क्योंकि रनंजय को, वो इंडियन है, कभी रनंजय वही जिनके साथ आप बकरी पकड़ के आपका फोटो देखा. हाँ, रनंजय वो तब एक मतलब पहली बार जब रोजाना से मिली, रोजाना इज लाइक शी, everybody knows her as my sister. वैसे ही मतलब बन गया है, क्योंकि we're so close, and in India and all that, I'm an Armenian thing, and he comes and we were very close with Rananjay, so we all sort of consider her as my sister. She considers me as her brother-in-law. तो then मैं तो ऑनलाइन, तब रनंजय को भी उतना ज्यादा पता नहीं था आर्मीनिया के बारे में. पता तो किसी को ज्यादा होता नहीं है, छोटा देश है, नॉन इन्फ्लुएंशियल ऑन द ग्लोबल लेवल. तो एग्जैक्टली तो बहुत कम लोगों को पता होता है जनरली, अक्सर इंडिया में. तो then they started, मतलब in that sense Rananjay also realized that काफी लोगों को इंडिया में आर्मीनिया के बारे में पता नहीं, and vice versa आर्मीनिया में भी लोगों को बारे में, मतलब इंडिया के बारे में गलत फहमियां बहुत है, क्योंकि mainly from Soviet time films या this new soap cinemas that come and all that, people sort of make their understanding of India, they take clues from there, which is obviously
बहुत गलत होता है कि इंडिया वैसा नहीं है, वो सास बहू वाला सीरियल्स में जैसे होता है, तो काफी लोगों को लगता है वैसे ही है. तो देन दे फॉर्म दिस फेसबुक ग्रुप एंड ऑल दैट. तब मे बी आर्मीनियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया एक फेसबुक पेज या ग्रुप चला रहा था. देन वी केम इनटू कांटेक्ट विद Rananjay. Then we started talking and all that. Then once one thing led to the other. This entire Facebook group grew to a size, and it was in 2011. It was registered as an NGO in Armenia on an official level. And then we started working with Indian embassy. काफी programs हम लोग embassy के साथ कर रहे हैं, cultural programs and all that. So वो 10 साल ऐसे चला. Then we had this. We were sort of an NGO was functioning without India, and a lot of Armenians who were interested in India and all that Indian culture काफी आते थे, and most of our volunteers and all our members are Armenians. And then sort of we do Indian cultural program over here, and 99% Armenians ही करते थे. Armenian girls singing, Armenian girls dancing, Armenian, all Indian things, but it's mostly yes, I have seen. I wish I had asked you for one of those videos, Karan, तो हम लोग वो show करते, because Armenian girls sing Indian songs in your NGO and they are dancing in all these Bollywood songs and everything. It's wonderful. तो आप लोग जो इतना अच्छा cultural काम वहाँ कर रहे हैं, are you the only unique NGO जो Indo-Armenian friendship के ऊपर काम कर रहा है पूरे आर्मेनिया में, या फिर there are others as well? No, abhi though there are one or two others who are also, for example, have started and all getting into Indian, because Indian culture यहाँ पे काफी popular है. बहुत लोगों को interest है in that sense. हाँ, Indian soft power through Soft power, हाँ वो है. And then we have many. The new generation knows all these newer actors and all. We've got fan clubs over here of Bollywood actors and all that. But the older generation remembers up to now also all the older. From Raj Kapoor to Mithun Chakraborty and all that Yeah, some disco these dancers. people were very famous in Soviet Soviet Republic. times. Yeah, of course. And then recently also we had this one of the activities we did with our Georgian friends. There was a documentary film that we made on an Armenian actor, Soviet actor, Frunzik, who acted in Indian films, two Indian films, Ali Baba Chalis Chor and Sohini Mahiwal, or whatever. And this movies, there's an Armenian actor, a very prominent Armenian Soviet actor who's sort of a hero in Armenia in that sense when it comes to cinema. तो वो अली बाबा चालीस चोर का वो डाकू होता है ना, वो दाढ़ी वाला जो उसको, वो आर्मीनियन है. काफी लोगों को वो भी पता नहीं है, मतलब एक इंटरेस्टिंग वो कनेक्शन है. So at the initiation of our Georgian friends, David, he's a producer, Georgian. He's also big Bollywood geek and all that. So we collaborated. We made that sort of a documentary on his life, and it was shown over here. It received a big positive reception. You know? So काफी मतलब इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स तो करते हैं. एंड देन मेरे को पर्सनल फायदा भी हुआ है, बिकॉज आई मेट माय गर्लफ्रेंड थ्रू आवर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसको भी शी सिंग्स इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग्स बचपन से एंड ऑल, वेरोनिका. तो वो भी आई थी हमारे एनजीओ में. तो ऐसे 2 साल शी इज वन ऑफ आवर एक्टिव मेंबर्स. तब हमारा मुलाकात उधर ही हो गई. शी इज नाउ माय गर्लफ्रेंड एंड आल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स शो आवर ऑडियंस योर गर्लफ्रेंड है ना, and a little bit of work that your NGO is doing. Yeah, it's we put some of our activities on our website. It's india-armenia.com. You should type it in the comments, Karan, so that people can see it and they can visit the website. Sure. That will be very good. Just a second. Window, yeah. So this is Veronica. She's dressed in sort of some dance costume or something. Yes, and this is one of the shows that we did. That's the actor that I was just telling you about. The fact that thing Frunzik, and then his India Bollywood connection, all that. And Veronica, of course, वहाँ पे she sang one of the songs from the movie and all that, Khatuba, if I remember correctly. So उसमें she was dressed on the occasion. So yeah, we have this. And I think one of your pictures, so this person who's playing the sitar, he's also an Armenian. He also has a very interesting. वहाँ पे he's based in Australia, लेकिन उसका family links Calcutta से है, क्योंकि Australian New Zealand family, I mean Armenians जो है वो खासकर Calcutta की Armenians, Indian Armenians who migrated across the time more towards the end, towards India's independence. काफी लोग वहाँ से गए, settle हो गए तब.
programs Okay. चलता था. So his family went from Calcutta and they established themselves there, and now he's a musician. He plays the sitar and all. कभी कभार Armenia आता है, and then Fascinating. we have programs and all. So this That's is our NGO. We had a school kids that visited for an orientation program to get to know about India and all that. So we showed them yoga and dance and all. And Peter was luckily in Armenia at that time in Yerevan, so we requested him, "वो आया कुछ सितार मतलब rendition." Showed them the kids, I mean, like they got to know सितार क्या है, कैसे बजता है, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं है ना. खैर जो वेस्टर्न जो म्यूजिक सुनता है, थैंक्स टू रविशंकर एंड हिज डॉटर एंड ऑल, वो लोग सितार से कुछ तो उन लोग को मतलब पता होता है, लेकिन उन फिर लोग भी को पता है. उतना गिटार जैसा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट नहीं है. तो और देखने में भी काफी ओरिएंटल लुक है, तो फैसिनेटिंग लगता होगा बच्चों को देख के कि इतना सुंदर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट ये है ना. And to have an Armenian play that Indian classical Exactly. instrument, और उसका भी family background Calcutta से related है and Iran से related है, so it was a very बहुत holistic बहुत ही experience एक तरह से. इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग. ये तो लग रहा है इंडिया का ही है. This is India. It's in some हाँ Bangalore, I think, or somewhere. हाँ. So ये this कौन सा is. पूजा चल रहा है कारण? I think we were having शिव जी का पूजा या कुछ इसमें कुछ था. We were, it's in our centers. We कभी हम लोग ये सब करते हैं, and most of them are Indian students from the medical university and some Indian families. So वो लोग आते हैं, we like collaborate with them, and we have this different pujas, and we try to celebrate as much of Indian culture as possible. We do yoga, holy and all. यहाँ पे ऑडियंस रिक्वेस्ट पे एक और फोटो दिखाना है. ये एक फोटो एग्जैक्टली उस टाइम पे लिया गया था जब ओबामा इंडिया आए थे, तो इस फोटो को मैंने ही क्लिक किया है. ये हमारा एक फ्रेंड है शादाब, और इस फोटो को मैंने बोला है द मोदी एंड ओबामा हैंडशेक है ना. ये कारण इसमें है मोदी, ओबामा है शादाब. 20 years ago ऐसे करके हमने इसका टाइटल दिया था, द मोदी एंड ओबामा हैंडशेक 20 years ago. दोनों यंग है इसमें. मासी के घर पे था ना ये. हाँ, मेरी मासी के घर पे है ये. ओके, तो ठीक है कारण, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, और आपके ये अभी के काम को देख के, what you are doing right now, it is just fantastic. एक क्वेश्चन आया आपके लिए. What's Armenia-India relations now? What's the agenda of the bilateral relations? Can you give us an answer on that? Of course, well, I'll try to. Historically, काफी मतलब generally before this independence and all that, if we go on the historical background, काफी strong रहा है, thanks to the Armenian presence in India, of course, and very few people know that the freedom struggle of Armenia. India was one of the hot centers because we had this Madras group, for example, who used to write. They wrote the first Armenian constitution in Madras, the first Armenian newspaper or periodical, if it's called Azdarar, was published in Madras and all. So the Armenian community in Madras and in Calcutta and everywhere was struggling for for Armenia's independence back then. So this political activism thought was always there, and that has always been the presence of Armenians. And also, we at some point in history we used to have a Hindu colony in Armenia also. That's also an interesting touch because, according to history, two princes escaped from Kanauj in a supposed failed attempt to overthrow the local ruler, and then they escape and they find refuge in the Armenian kingdom. So Armenian Raja unko ek zameen deta hai. Then they established for 3 generations, 3 centuries, they have a Hindu kingdom. This is before the advancement of Christianity. फिर Christianity के बाद पूरा pre-Christian जितना भी temples और that were of course destroyed. Then post-independence, we have always maintained this positive touch in that sense. We haven't invested much in the relations, but bilateral support, Armenia supporting India's bid to UN permanent seat was there, and Armenia supporting India's stance on Kashmir has always been constant and all that. And we have had presidents visiting and things like that. Like in recently, in the recent years, thanks to geopolitical shifts that are happening, Armenia and India ties are even growing stronger because India is sort of becoming more advanced, sort of venturing outside of its general sphere and coming into new territory. And Armenia, of course, our region is very dependent on Russia in that sense. But now we are diversifying. We have got into arms deal with India. We are getting into economic deals, north-south transport corridor, which would connect India. And India is investing a lot of money in Iran, Chabahar, in developing the Chabahar port to establish another separate route to connect India with Europe.
जनरली एक वाया रशिया था, लेकिन अभी आफ्टर द वॉर इन यूक्रेन थोड़ा अनरिलायबल हो गया है वो, क्योंकि it's indefinitely, you don't know when India will be able to utilize that route because Europe and sanctions on Russia, of course. So India is looking at an alternative route, and Armenia is in a position to give India that alternative route to connect Iran and via Georgia and Armenia to Europe. So हम लोग काफी importance मिला है इस जगह को, and India is investing a lot and looking at our region because uh, we provide sort of a footing for India in the region in its, if I may radically call it, geopolitical expansion in that sense of the new new government in the of influence. You know? So it's looking positive. It's going in the right direction and all that. And in the coming years, we'll have a more of an Indian presence in Armenia in the sense of more trade and commerce. वहाँ पे हम लोग थोड़ा पीछे है in the sense that when there is no trade, when there is no business, the bilateral ties are generally accelerated by the presence of business and all other ties, because जब business होता है, पैसा होता है, लोग आते हैं, then automatically everything else falls into place, because Yeah. then the government wants to looks at the region even more. But it has always been positive. We have never had a time historically or now that where Armenia and India ties have been bad. It's always been good, but at times it went better, at times it's been dormant. But we have always been sort of friends on the international stage, supporting each other whenever and however possible. Great, great. With that amazing answer of yours, Karan, language studies में आप थे, but लग रहा है आप तो School of International Studies के student ने अभी answer दिया है. Great, great job, Karan. And it's really reflecting all the experience you've developed in India, the work that you're doing right now. It is so important and it is so amazing. I'm so proud of you. And just very thankful for this chance that you got to come to India when you were I seven, know. 8 years old, and you became who you are today. So big I know it thanks. was it's an opportunity very few people get, and then whatever the road sort of takes you down, then after that it's like a kind of a destiny kind of thing, right? You Exactly. what are the chances? कोई school बनाता है 200 साल बाद कोई school में, then another person comes and starts giving scholarships, and then you among all the people get one of the few who get the chance to go there. So it's a privilege जो मैं lightly लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है नहीं, ऐसे the सबको work that you are doing in the continuation of, मतलब आपका जो एक वो है, ऐसा नहीं है ना कि आप वहां जाकर आपने एक दुकान खोल लिया है, आपने एक्चुअली एक you are continuing the legacy that was kind of given to you या in a एक way. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक तरह से, क्योंकि जो भी मैं Exactly. कुछ हूँ आज, मतलब इंडिया के वजह से हूँ, लेट्स फेस इट इन द सेंस दैट इंडिया ने सब कुछ दिया है मेरे को जो यहाँ पे अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए. सो इन द सेंस बीइंग इन टच, एक तो एक पर्सनल वो है, क्योंकि आई ग्रो अप इन इंडिया, मतलब इंडिया इज देयर इज दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, क्योंकि पूरा समाज जो है, 8 साल का बच्चा, ठीक है आर्मीनियन में हूँ, लेकिन 8 साल का बच्चा कितना चीजों को समझता है, कुछ नहीं. जो मेरा एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ वो सब The इंडिया में हुआ. conscience itself is कॉन्शियस. developing at अब that age. Yeah. अभी भी मेरा दिन शुरू होता है, मैं सुबह उठता हूँ, जैसे आयरनिंग करना है या कुछ ऐसे खाना पकाना है, मैं ऑनलाइन कुछ इंडियन न्यूज लगाता हूँ, यूट्यूब में लगा के फिर सुनता रहता हूँ, जस्ट टू बी इन टच. वहाँ पे एक इलेक्शन होने वाला है, तो मेरे पता नहीं मेरे को राजस्थान में हो रहा है या कहीं और, मुझे देखना है कि त्रिपुरा में इलेक्शन हो रहा है, रिजल्ट में देख लूँ कौन क्या किया, मेरे को मतलब ही नहीं है, मतलब यहाँ पे हूँ. लाइक यू कैन नॉट स्टिल लिव विदाउट इट, राइट? तो इन द सेंस एक तो एक आइडेंटिटी बन गया है, दूसरा यू टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इतना तो इंडिया से आप लिए हो, थोड़ा अगर वापस देने का मौका है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए. अमेजिंग. कारण एक चीज और पूछना था, आप इतने ज्यादा इंडियनाइज हो चुके हैं, तो हाउ डू योर कंट्री पीपल व्यू यू? डू दे व्यू यू डिफरेंटली और इट्स जस्ट द एक सेम? नो एक वो होता है, दे नो, दे मोस्ट ऑफ देम नो मी, whoever knows me with that India connect and Indian national, कुछ इंडिया का होता है तो मेरे से आगे पूछते हैं. that when you, एक वो होता है ना कि आप ना यहाँ के हैं ना वहाँ की, क्योंकि कोई आपको, मतलब आप दोनों की हो, लेकिन in that sense that when you are in India and you start taking part in discussions and all that, जब तक they sort of
your thought process meets with this, तब तक fine. When you get a little critical, sometimes that thing comes, तू तो फिरंगी हो, तू नहीं जानोगे, ऐसा ही है, in that sense, right? तू तो बाहर के हो, no matter how much you fit in, you're always that, there's that touch of तू तो बाहर के हो ही, तुम तो तेरे परदेसी types. And then यहाँ भी वही है, in that sense कि तुम यहाँ भी जितना भी आप बोलो, they'll be like, तुम यहाँ रहे कब जो तेरे को पता होगा, तेरे को पता नहीं आप बाहर के हो. So you had that sort of that identity of your interest जो वहाँ भी when you are a foreigner, यहाँ भी तुम बाहर के ही हो आर्मीनियन, लेकिन आए तो बाहर से हो. तो ये वाला जो ये मैं वही हाईलाइट करना चाहती थी कि जिन लोगों के लाइव्स ऐसे होते हैं तो वो एक कभी कभार दोनों जगह को बिलोंग कर लेते हैं और कभी कभी दोनों को नहीं भी, है ना? हाँ वही है कि and then I always say मैं लकी हूँ. मान लीजिए जैसे if India and Armenia didn't have good relations, my loyalties would be questioned every day. मैं मतलब दोनों भी मेरे को एक threatening eye से देखता, क्योंकि तू तो इंडिया से ज्यादा वो हो, तेरा दिल लग चुका है, या तुम तो दिखावा करते हो, आर्मेनियन नहीं होना तो कभी भी धोखा देगा. In that sense that my allegiance would always be in question, but क्योंकि we have a very good relations, thankfully, क्योंकि हम अपना loyalty मतलब सपोर्ट करने में रोज मेरे को वो ही जाता कि भाई मैं मतलब आर्मेनियन हूँ, ऐसा नहीं है, या मैं इंडिया से वो नहीं कर रहा हूँ. नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि थैंकफुली दोनों कंट्रीज के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस है. तो कारण कुछ ऐसे इंडियन कल्चरल ट्रेट्स जो आप यू हैप्पी दैट यू हैव देम एंड यू विल ऑलवेज कैरी देम विथ यू. पता नहीं, I think in what sense that I can sort of identify, but there are a lot of things that it becomes a kind of sort of a part of you. When अनजाने में भी whenever you are in discussion or something like that, people point at you, तू तो इंडियन की तरह सोच रहा है, तू तो इंडियन हो चुका है पूरा, तू तो ये मतलब in that sense it becomes a part of your identity. But I think maybe perhaps being argumentative is one thing that India teaches you, argumentative in a positive sense of critical thinking की हर चीज में सवाल करना, सवाल उठाना. And of course you have got that very strong family values in the sense that तो अपना लोगों का एक वो हो जाता है. When you grow up in a place where everyone's up they are very family oriented also, तो that एक तरह से आपके उसमें वो हो जाता है, पहले पता कर लो अपने लोगों को क्या 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 है, फिर बाहर को देखेंगे. So those are things that we care Armenians and Indians have in common. But as मैं क्योंकि बाहर से उसको स्टडी नहीं किया ना, when someone as a foreigner studies India and then you look at they are able to identify the traits and the difference and all. मैं तो वहाँ रहा हूँ, तो मैं उसी मतलब everything has happened with me in around me, with me involved in all that. तो it's very difficult to identify क्योंकि मेरे को वो ना foreign लगता है ना अलग लगता है जो मैं identify कर पाऊँ. It's very much part of me. तो भले ही अलग बाकी लोग जो मेरे को देख के मेरे से इंटरेक्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीजें मतलब इट्स नॉन कॉमन नीड आर्मीनियंस तुम उधर से उठाए होंगे. आई डोंट फील इट माई सेल्फ क्योंकि इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ मी, मेरा आइडेंटिटी है. मेरे लिए तो तुम ही एक आर्मेनियन हो. अब कोई रियल प्योर इंडिया नहीं आए हुए आर्मेनियन को मिलेंगे तो पता नहीं कैसा लगेगा. वही मैं बोल रहा हूँ, आर्मेनिया आ जाओ यहाँ पे एक बार थोड़ा रहो तब पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है. हाँ चलो करण, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई नो यू आर रियली बिजी. बहुत मुश्किल हुआ हम लोग को कभी कभी बीच बीच में कोऑर्डिनेट करने में, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर दिस अमेजिंगली यू नो enlightening as well as revelations for all the revelations that you did. बहुत अच्छा लगा बात करके. Although हमने कुछ इन चीजों के बारे में मैं तो हमेशा पूछती रहती थी, लेकिन इतने डिटेल में आई गेस हमने खुद ही पहली बार बात करी है about your origins and about your roots and your whole experience in India. It was a great conversation and I hope that our audience has also been enriched by this discussion. Thank you so much, Karen. Thanks for having me, Vijay. It's also an opportunity. बहुत लोगों को काफी आर्मेनिया के बारे में पता चलेगा. I just remembered something. हम लोग हमारा स्कूल में कलकत्ता, I'll just tell you this short story before we finish. हमारा स्कूल is called Armenian College. और that's something that is quite famous in Calcutta. पुराने लोग because we used to have a strong rugby team जो हम लोग हमेशा कप जीतते थे. तो कलकत्ता में आर्मेनियन नाम अलग नहीं है, बहुत लोगों को पता है. But they didn't know that the country also exists. तो एक दिन we are in Calcutta, we are outside. तो ये पूछ रहा है कि किसी ने पूछा कि आप कहाँ से हो? मैंने बोला आर्मेनिया से.
बोला नहीं, अब देश कौन सा? मैंने बोला आर्मीनियस है। बोला वो तो आपका स्कूल का नाम है ना, देश कौन सा है? तो काफी लोगों को क्योंकि इसने आर्मेनियन कॉलेज, बहुत लोगों को पता नहीं है इसका देश भी है ऐसा। तो अच्छा so अच्छा anyone काफी लोग मुझे लगता है जो they'll stumble upon your channel somewhere doing something in YouTube will at least find out ऐसा देश भी है ना, कि हमारा सिर्फ स्कूल हाँ का नाम है। मैं टाइटल में एक्चुअली लिख दूंगी, लाइव इन कॉन्वर्सेशन विद आर्मीनियन इंडियन Karen Mkrtchyan, ये ऐसा कुछ। Thanks for हाँ having me. It's been fun ठीक है। conversation, and besides this YouTube format, it's always a pleasure talking to you, Dr. V. It's always सेम fun, ईयर fun करें, conversation. टाइम कब सेम। कैसे ऐसा, हो मतलब गया, हम लोग का मीडिया बहुत पता भी नहीं एक्सटेंड चला। टाइम। लेट्स नाउ एंड दिस ब्रॉडकास्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।